And viewers, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you, and today the thing which we will be discussing in today's tutorial, that will be type 2 or would conditional. So let's come what this conditional is. We will have a very comprehensive lecture about that. So first of all, I would like to give you the usage of this conditional, why this conditional is used, type 2. Can anybody tell me where do we use it? What is the function of type 2 conditional? If you do not know, let me explain it. Type 2 or would conditional is used to speak against the present facts. बेटे present facts mean indicative. Indicative क्या होता है? Reality. Now in this conditional you will start talking against the realities. Whatever is real you are going against that. ठीक है? तो हमने क्या लिखा? Type 2 or would conditional is used to speak against the present facts, or it is used for unreal cases. It is used for unreal cases. To get information about this conditional, you must have knowledge about one very important case, and that is called subjunctive case. Subjective nahi, subjunctive case. You must have knowledge about subjunctive case. Can anybody tell me what is a subjunctive case? Do you have knowledge about that? No. Let me explain. In this case, this case is used for unreal cases. One thing, for unreal cases, in this case, the past tenses are used for present meaning, for the present meaning Actually, respectable students, whenever you are going to be hypothetical cases, it means, in other words, एक और छोटा सा इसमें ऐड करता हूं, in other words, it is used for hypothetical means unreal cases, imaginary cases, in which you are going to talk against the present facts or the past facts. But right now we are going through type 2, so we will be going through the present facts. Now the next thing which you know very well, respectable students, you know each type of conditional sentence is used for how many functions? 3. Number 1, for action. Number 2, status. Number 3, for property. So here I'm going to make a sketch of all 3 functions so that you may not be confused. Number 1, for action. Number 2, for status.
Number 3, for property. Now everybody knows that we have two clauses in each type of conditional sentence. If clause and main clause. Acha, in if clause, dears, we will use second verb. Which verb? To be means second form of verb. And in main clause, we will be using would. Main clause, we will use would plus first verb. Okay? Now come towards status. In status, respectable students, in if clause, we will use were with every name. Were, not was. The moment you start using was, the complete subjunctive case will be destroyed. सारा subjunctive case उलट हो जाएगा और जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप नहीं कह सकेंगे. तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इनको हम कहते क्या है. And in main class, it will remain the same. If you talk about the property, in if clause, you will use single had instead of has and have, and your main clause will remain the same. Is it okay? Acha, now, respectable students, whatever I have mentioned over here, second form, were and had, these are called hypothetical word या hypothesis verbs. आप एक छोटा सा नोट लिख लीजिए. In type 2, or would conditional, we use which verbs? Hypothesis verbs. Hypothesis verbs. What are hypothesis verbs? Hypothesis verbs are used for unreal cases. Understood? Any confusion up to this place you can mention. Now, dears, very first case I'm going to pick up for you people, and the very first function is for action. For action. Simple formula will be if plus subject plus hypothesis verb. What is that? Second form of the verb plus object plus comma plus once again subject plus would plus base form of the verb plus object and plus full stop. Now, dear student, just say if they attended the classes, comma, they would get knowledge. Now just see, respectable students, this is your which clause? If clause. If connector, they subject, attended hypothesis verb, object the classes. So which clause is this? If clause. Now this is your which clause? Subject would, base form of verb, knowledge, your object. तर्जमा ये बनता है main clause. The translation will be अगर वो क्लासेस में हाजिरी देते तो वो इल्म हासिल करते. अगर वो, अब क्लासेस की जगह जुमातों हो जाती है, हाजिरी देते तो वो इल्म हासिल
करते। अब बेटे हकीकत क्या है, देखिए ये हम उन लोगों के लिए बोल रहे हैं, यानी अगर क्लास में 20 बच्चे, 20 में से 5 रोज नहीं आते, अब जब वो बैठे हुए क्लास में तो बाकी 15 तो बहुत अच्छे जवाब दे रहे, बट एक्सक्लूडिंग दोज 5 स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन। अब रियलिटी है कि ये बच्चे रोज नहीं आते। अब मैंने क्या कहा कि टाइप 1 जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं और हाइपोथेसिस वर्ब यूज कर रहे हैं, तो जो हकीकत है हम क्या करेंगे, उसके खिलाफ बात करेंगे। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये क्लासों में हाजिरी देते तो इल्म हासिल करते या इल्म मिल जाता। रियलिटी क्या है, दे डोंट कम टू द क्लासेस रेगुलरली या दे डोंट अटेंड द क्लासेस। रियलिटी क्या है, इन रियलिटी दे don't attend the classes। समझ आई? हकीकत क्या है बेटे, हकीकत में वो क्लासेस में हाजिरी नहीं देते, इसी वजह से वो कुछ हासिल या सीख नहीं पाते। मिटा दूं? नाउ जस्ट सी वन मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव। She would win the prize if she joined the session. There is a student, for example, who is very talented, but in every debate contest she does not participate। मैंने आपको क्या कहा बेटे, सब्जेक्टिव केस, यानी आप गौर कीजिए कि मैंने टेंस पास्ट का यूज किया था। अगर मैं इसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूं तो इसका तर्जुमा ये नहीं होना चाहिए था, आप देखें हाजिरी देते, लेकिन ये तो पास्ट टेंस है, इसमें तो ना अगर उसने एक हाजिरी दी थी, ये बोला नहीं मैंने। क्यों? क्योंकि यही है सब्जेक्टिव केस जिसमें पास्ट टेंसेस प्रेजेंट मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रेजेंट टेंसेस के लिए यूज होते हैं, लेकिन केस कौन सा होगा, अनरियल केस। अब यहां पर मैंने क्या कहा, शी वुड विन द प्राइज, वो इनाम जीत जाती। ये कौन सा क्लास है बेटे, रिजल्ट क्लॉज। अगला क्लास कौन सा है, इफ क्लॉज, इंट्रोड्यूस बाय इफ। ये रहा आपका हाइपोथेसिस वर्ब। अच्छा, तर्जुमा क्या बना, अगर वो सेशन ज्वाइन कर लेती या सेशन में शमूलियत करती तो वो इनाम जीत जाती। रियलिटी क्या है, शी डज नॉट ज्वाइन द सेशंस। हकीकत ये कि वो सेशंस को ज्वाइन करती ही नहीं है। सो अगर हाँ जी, what is reality? What is the reality? In reality, she doesn't join the sessions। अभी समझ आई बेटी बात, क्लियर हो रहा है? एक एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू ड्राइव केयरफुली यू वुड नॉट फेस एनी सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट। अगर आप ख्याल से गाड़ी चलाते तो आप हादसे का सामना ना करते। व्हाट इज रियलिटी, यू ऑलवेज ड्राइव केयरलेसली, आप हमेशा बद एहतियाती से चलाते हैं। इफ यू रिस्पेक्टेड योर एल्डर्स दे वुड नॉट पनिश यू। अगर आप अपने बड़ों की इज्जत करते वो आपको कभी भी सजा ना देते। लेकिन रियलिटी क्या है, यू ऑलवेज मिसबिहेव विद योर पेरेंट्स और एल्डर्स, दैट्स व्हाई दे पनिश यू। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हकीकत है उसके खिलाफ एक सोच कर रहे हैं या एक जुमला बना रहे हैं। जी, वन सेंटेंस शुड बी, 1-2 sentences शुड बी फ्रॉम योर साइड। जी, फॉर एग्जाम्पल, ओके जी, वन मोर, इफ यू टॉट अस वेल वी वुड नॉट फेस एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। अगर आप हमें अच्छा पढ़ाते तो हम किसी किस्म के डाउट में मुब्तला ना होते। व्हाट इज रियलिटी, यू डू नॉट टीच अस nicely. So what I think this is enough for today. Inshallah, in the coming tutorial, I will definitely come up with some other usage of type 2 conditional. Till that time, thank you very much. Keep on watching videos.
like, subscribe to my YouTube channel, and don't forget pressing the bell icon so that you may not miss my forthcoming videos. Thank you very much. Till next time. Allah Hafiz.